everyone, welcome back to Learn Then Code supported by Newton School. So in the last video, we covered about stack, how you can implement stack using arrays or linked list, and we solved some problems around it also. And we covered the stack STL as well. So it's the time to get started with a new data structure, which are queues. We have already covered the introduction of queues. So in this video, we are going to implement queues using arrays. So without any delay, let's get started with the video. So first of all, let's cover some theory around it. So we know that in queues, FIFO rule is followed, which is first in, first out, right? This introduction we have already covered in our previous videos in data structures and algorithm playlist only. Let's say this is our queue. अभी हमारी queue में एक भी element नहीं है. Now in queues, जो हमारा insert operation होता है, उसे हम बोलते हैं NQ. And the delete operation is known as DQ. So let's say अगर हमने कोई एलिमेंट अपना पुश करा क्यू में तो क्या होगा, फ्रंट पर हमारा एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा. लेट्स से द नेम ऑफ द एलिमेंट इज E1 एंड दिस इज आवर फ्रंट गेट. अब हम जब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे दैट विल बी एंटर्ड इन दिस प्लेस. सो जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं हमारा जो फ्रंट एलिमेंट है दैट विल बी सेम बट द रेयर एलिमेंट विल चेंज. सो रेयर एलिमेंट स्टार्टिंग में ये था, नाउ इट इज दिस. नाउ अगर हम एक और एलिमेंट एंटर करें इट विल बी एंटर्ड हेयर एंड द रेयर विल गेट प्लस प्लस. सो नाउ रेयर की पोजीशन हो जाएगी ये वाली. सो ये तो हो गया हमारा एनक्यू ऑपरेशन हम कैसे करते हैं. अब डीक्यू में क्या होगा, एस वी सेड कि क्यू में हमारा जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट मीन्स हमारा सबसे पहला एलिमेंट जो डिलीट होना चाहिए इट शुड बी E1. सो इट मीन्स कि हमारा जो डिलीशन है वो कहाँ से ऑपरेट होगा, फ्रंट गेट से. हमें जस्ट क्या करना है, हमारा जो फ्रंट वाला एलिमेंट है उसे प्लस प्लस करना है. सो जैसे ही फ्रंट वाला एलिमेंट प्लस प्लस होगा इट मीन्स वो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाएगा, वो इस वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा. तो अब हमारा जो क्यू है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमने अपना जो फ्रंट एलिमेंट है उसे प्लस प्लस कर दिया है. तो अब हमारा क्यू यहाँ से स्टार्ट होगा. और द अदर वे टू डू दिस इज कि आप इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो. दैट कैन ऑल्सो बी डन बट उससे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा. इट विल बी O of n. सो टू अवॉइड दैट यू कैन सिंपली डू फ्रंट प्लस प्लस सो दैट आपका एलिमेंट जो होगा वो बस एक मूव आगे चला जाएगा. आपका जो फ्रंट जो हमारा पॉइंटर है वो एक मूव आगे चला जाएगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डू DQ ऑपरेशन. सो दीज आर द मेन टू ऑपरेशन. इसके अलावा अगर आपको गेट फ्रंट एलिमेंट करना है which is to get the front of your queue, you can simply return array of front. So these are the basic three operation. इसके अलावा आप implement कर सकते हो size of your queue or maximum elements you can insert in your queue. All these operation which will be similar to how we performed in stack. So this was all about theory. Now let's get started with the implementation. Now let's say we are creating a class with the name Q. अब इसके अंदर अगर हमें array से implement करना है अपने Q data structure को तो सबसे पहला data structure जो हमें required है which is an array. तो let's create an array and हम pointers के through implement करने वाले हैं array को. So let's name it Q. उसके बाद हमें कौन कौन से members चाहिए होंगे इस class में. Of course हमें size चाहिए अपने array का, front element चाहिए. उसके बाद लेट्स क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसमें हम पैरामीटर में साइज दे सकते हैं एंड लेट्स इनिशियलाइज आवर एरे फर्स्ट. सो q इज इक्वल टू न्यू int of size. It should be s. Your size will be equal to s and your front and rear will be equal to 0. Let's say this is your start condition. If your front and rear is equal to 0, that means your queue is empty right now. Now this is all about constructor and आप start condition अपने हिसाब से भी रख सकते हैं. You can keep it as let's say front and rear is equal to -1 as well. But उसके according आपको अपने functions को moderate करना पड़ेगा. So the overflowing condition and the underflowing condition will be different if you are changing your initial condition. So please
take that as a note. Now let's get first started with the NQ operation. So NQ operation का जो return type होगा that should be void, क्योंकि हम कुछ return नहीं कर रहे हैं, हम बस एक element को insert कर रहे हैं अपनी queue में, and the name will be NQ. There would be one parameter जो भी हम data NQ करने वाले हैं. So the first condition that we need to check is whether we have enough space in our queue or not. So हमें सबसे पहले overflow की condition check करनी होगी. And what is the condition for that? So if your rear element is equal to your size, then your queue is completely full. So you can see out queue overflow and then return from here. Or if you have enough space to enqueue this data, then all you need to do is you have to just insert it in the rear index. So data. So with this statement, you are first inserting your data in the rear index and then you are incremented your rear index. So सबसे पहले आपका rear जो भी index होगा, let's say initial के case में that was 0. So 0 पर सबसे पहले आपका data insert होगा and then your rear will be incremented to 1. So now it says that your queue size is 1 and आपके 0th index पर एक element present है. So this is about your NQ operation. नाउ अब आते हैं DQ ऑपरेशन पर. तो DQ इज काइंड ऑफ पॉप ऑपरेशन, तो उसका भी जो रिटर्न टाइप होगा दैट विल बी वॉइड. नाउ DQ एंड कोई भी हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है DQ में, राइट क्योंकि हम खाली एक ही साइड से DQ कर सकते हैं. सो दैट इज वाई नो काइंड ऑफ इंडेक्स या फिर पैरामीटर इज रिक्वायर्ड इन DQ ऑपरेशन. सो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमें चेक करनी होगी क्या हमारा क्यू अंडरफ्लो है. सो अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, हमारे एलिमेंट, हमारा जो क्यू है उसमें सिंगल एक एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स वी हैव सम एलिमेंट्स टू DQ. बट अगर हमारा एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन है एंड दैट इज इक्वल टू हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी. सो व्हाट वी कैन चेक इज अगर हमारा फ्रंट एंड रेयर इक्वल है विच इज इक्वल टू 0, it means that our queue is underflow. So you can see out underflow. So if you have enough elements to DQ to apply DQ operation, so आपको क्या करना होगा, आपको हर एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करना होगा एंड जो आपका फ्रंट वाला एलिमेंट था दैट विल बी डिलीटेड. तो आप एक फॉर लूप लगाओगे int I is equals to 0 से लेकर दैट इज योर इनिशियल एलिमेंट एंड कहाँ तक लगाओगे rear -1 एंड देन I प्लस प्लस. एंड इस फॉर लूप में ऑपरेशन क्या होगा, Q ऑफ I इज इक्वल टू Q ऑफ I प्लस 1 विच मीन्स हम एक एक हर एलिमेंट को एक एक इंडेक्स पीछे लेके जा रहे हैं एंड एंड में हम क्या करेंगे rear माइनस माइनस. सो दैट विल बी योर DQ ऑपरेशन. सो हमने अभी तक NQ ऑपरेशन देखा है एंड DQ ऑपरेशन देखा है. नाउ लेट्स ट्राई टू implement get front function as well. In this also we don't need any parameter because get front के अंदर हम खाली front element ही fetch करने वाले हैं. So we already know कि कौन सा index हमें चाहिए array का. So इसके अंदर भी हम सबसे पहले underflow condition check करेंगे whether we have enough elements in our queue or not. And after that, if we have some elements in our queue, then you can get the front element by simply returning queue of front. That's it. So now we have implemented all the three functions, and if you want to implement like get size and all, then you can simply return the size member of this class. So that's all about the main functions. Now let's try to test them. So first we are creating an object of this class. Let's say the size is 3. First we are pushing, let's say 1 in our object, and let's see out the top element now. Object.getFront. Let's apply the DQ operation and now see out object.getFront. So let's first see what should it return. So first of all, it should print 1 because the first element that we have pushed in our queue was 1. Then as we perform DQ operation, so now our queue is empty. And then if we are performing get front operation, it should say that the queue is underflow. So now let's try to run our program. Now, as you can see, the first output is 1, which is the
front element when we had one in our queue. Then as we perform dequeue operation, so the queue is underflow, so we cannot get the front element. And -1 was the return value for this get front function if the queue is underflow. So the code is working fine. We have implemented all the important functions of queue, which is enqueue, dequeue, and get front operation. But if you want to implement more functions like get size and all, then you can perform them as well. So that's it for today's tutorial. If you find the video useful, then don't forget to subscribe to our channel. And also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. You don't have to pay any upfront fees for the course, and all you need to do is to enroll in the course using the link below in the description box. So what are you waiting for? Click in the link which is available in the description, and keep learning and keep growing.